I think we're live now. हाँ मैं यही कहने वाला था. Uh, I think let's just sort of start, and I'm just waiting for Amna to let me know when we're live on Facebook so that we can formally start. जो लोग अभी देख रहे हैं, hi guys, this is Salman. I've got Ehmad with me today. Okay, I think I've formally gotten the green light so we can go. Assalamu alaikum everyone. मेरा नाम सलमान है. I am a part of the founding team at Kamayi, which is essentially an end-to-end startup working in the HR space. Today, we're doing episode 2 of our web series called Career Conversations, which is made ताकि वो जो conversation होनी है industry leaders में और students में, trainees में, job seekers में, तो उसको हम लोग facilitate कर सकें. आज मेरे guest मेरे एक बचपन के दोस्त और अब I guess coworker, colleague, friend, Ehmad Zubair, someone who has really jump-started his career in tech and has provided a good path for others to follow. Ahmed, मैं थोड़ा सा आपको तारुफ करा देता हूँ, उसके बाद आप खुद ही करा देना. Ahmed is someone who graduated from NUST, went into Arbisoft, spent quite a few years working there, was a big part of the hiring process. So जो recruitment का process होता था, testing होती थी, उसके design और implementation में इनका हाथ था, and then he started his own firm. So Ahmed, do you want to sort of just introduce yourself? Thank you, Salman. Thank you for having me. Assalamu alaikum, everyone. For those of you who know me from YouTube, तो आप लोगों को तो पता ही होगा. बाकी लोगों को just giving you a little bit of a flashback of my career. I started in 2014 as an Android engineer. उसके बाद मैंने तकरीबन एक साल बाद I switched towards iOS. iOS में एक साल काम करने के बाद I felt कि जो mobile वाला landscape है, it started kind of limiting my scope as an engineer. So I thought, why not just try the backend side as well. So here backend side, I started working in Python and Django, and that piqued my interest in other things related to web on the front end side as well. So in the last 6 years, I've pretty much worked on a little bit of mobile and a lot of web development. So everything that comes today will be on the back end of those things. I've pretty much kind of tasted all different domains in tech. Just recently, I did a nano degree in data science as well. So yeah, some people might think यार अच्छा ये चीजों में different चीजों में jump करने से ये you just end up becoming a jack of all and a master of none. So I'm also probably going to discuss that part in today's talk as well. So yeah, this is me, and just recently I founded my own tech company. And for those of you who don't know me from YouTube, so I have a small YouTube channel where I discuss the career in tech, my experience as a software engineer, and my learnings that I just want to share with people who are working or studying in tech right now. Thanks for coming here, Ahmed. For our viewers, a bit of context. Ahmed और मैं स्कूल में साथ होते थे. Ahmed हमारे पूरे स्कूल को फुटबॉल सिखाता था basically. So it's kind of ironic कि 10 साल बाद वो हमारे viewers को tech की jobs के बारे में सिखा रहे हैं. My first sort of question, Ahmed, is कि what are you doing now, and why did you decide to do whatever you are doing now in life? I think we're talking about Cogent Labs. So क्यों आपने वो step लिया, and why do you feel that was important? All right. So I've worked at Arbisoft for about 6 years. 6 साल हो गए थे. जिन लोगों में फॉलो करता हूं उनमें से एक मैल्कम ग्लैडवेल है. मैल्कम ग्लैडवेल की एक बड़ी जबरदस्त किताब है आउटलायर्स के नाम से. उसमें he gives the concept of a 10,000 hour rule. He says कि आप किसी भी फील्ड में जब 10,000 साल आप 10,000 घंटे आप स्पेंड कर लेते हैं ना, तो then the odds are that you become an expert in that field. So I was feeling like I had learned pretty much all that I had from one of the top companies in Pakistan, and I felt the next logical move for me would be to do my own thing, have my own software company. So yeah, this is what I just did. About it's been less than a couple of weeks. So yeah, this is where I am right now, and I think this probably is the next logical step for me, and only God knows where it takes me. Chalo, Ahmed, it's great to have you here. I think we can sort of get started with the topics जो हमने plan किए थे आज के लिए. The first topic, which I'm sure a lot of people are interested to hear about, is how to land your first job. I'm going to divide this into a few sort of subsections. So the first thing is
जब आप खुद ही हायर कर रहे होते हो स्पेसिफिकली टेक के डोमेन्स में, बी इट मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, बी इट some other skill, what do you sort of look for? What are the traits that आप कहते हो यार अगर इस बंदे में ये trait हो? Of course technical skill एक चीज है, उसके अलावा anything that you sort of see? ऑलराइट, सही है. सो इसके बाद आई वुड आल्सो वांट टू डिस्कस के so for somebody to face me, eh, for somebody to get to the point where they just get one on one with me and I decide कि if they're worthy, मतलब they qualify for the job or not, उससे पहले ही बहुत सारी चीजें which I'd love to discuss as well. But Yeah. let's say if somebody has made it to the interview and I'm on a one on one interview with them, तो मेरे लिए सबसे important चीजें जो हैं, the first one would be the attitude of the person, के can do attitude होना चाहिए, give up नहीं करना चाहिए. So interviews के अंदर भी फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक टेक का इंटरव्यू है और आपको एक कोड ब्लॉक लिखने का कहा गया है एंड यू रियली डोंट नो वेयर यू आर गोइंग विद दैट लॉजिक एट द स्टार्ट, तो आई वुड रिकमेंड कि जो मर्जी, जस्ट डोंट गिव अप, जस्ट कीप ट्राइंग. सो दैट द ग्रिट एंड द एटीट्यूड ऑफ just trying and not giving up, I think that is very important for me. नंबर 2 पे जो चीज बहुत सारे टेक्निकल इंटरव्यूअर्स कंसिडर करते हैं लेकिन आई थिंक बहुत कम बताते हैं एक्चुअली, वो एटीट्यूड, वो ईगो है. सो जो भी बंदा आपके पास आ रहा है, जो कि इंटरव्यू दे रहा है, if they have even a little bit of ego in them, in even accepting कि अगर आपको इंटरव्यू एक चीज कह रहा है कि यार ये गलत आप कर रहे हो और आप आगे से डिफाई कर रहे हो, तो आई थिंक ईगो इज अ वेरी बिग रेड फ्लैग फॉर मी. सो एटीट्यूड फर्स्ट, अच्छी चीज. एक प्लस पॉइंट एटीट्यूड है मेरे लिए. ईगो इज टोटल नो, क्योंकि अगर आप में ईगो है तो इट्स अ वेरी बिग इंडिकेटर कि आप ऑन द जॉब सीखने से भी उधर भी आपकी ईगो निकल जाएगी. द थर्ड थिंग इज टेक्निकल स्किल. ऑफ कोर्स जो आपने डे जॉब पे अपनी पूरा दिन करना है, टेक्निकल स्किल, एनालिटिकल एबिलिटी, और फाइनली कम्युनिकेशन स्किल्स. कम्युनिकेशन स्किल्स का ये मतलब नहीं है कि आपको अंग्रेजी बोलनी आती है. कम्युनिकेशन स्किल्स का ये मतलब है कि अगर आपके जहन में एक चीज चल रही है, आप उसको कितना क्लियरली और कितना कंसाइसली दूसरे बंदे को बता सकते हैं. तो बहुत ज्यादा लोग कंफ्यूज करते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स को, क्या इंग्लिश बोलनी आती है, क्लाइंट अंग्रेजी कम्युनिकेशन अच्छी कर होनी सकते हैं, लेकिन चाहिए. नहीं. हाँ हाँ, तो आई थिंक दैट्स आल्सो गुड टू हैव. लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर मैं उर्दू में भी किसी को अपना आइडिया या अपनी अप्रोच या अपना पॉइंट ऑफ व्यू समझा सकूं उसको ऑफेंड किए बगैर, कम से कम अल्फाज में, तो ये 3-4 चीजें मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है व्हेन आई हायर कीवर्ड्स बीइंग पीपल. उसको ऑफेंड किए बगैर. हाँ डेफिनेटली डेफिनेटली. हाँ यू वुड, हाँ यू वुड नो कि यार काफी ज्यादा सिचुएशन होती है where you just have to be hard on somebody and get a very strong Yeah. stance on something. तो लेकिन offend किए बगैर communication, I think that's basically non-violent communication जो है ना, बहुत जरूरी that's a होती very है. big uh, yeah, that's very big for me. Okay. Okay, so now let's sort of step back then. Interview छोड़ देते हैं अभी के लिए बात करते हैं. There's 2 steps before that. One is the test की जो cycle होती है tech में often. So Arbisoft में you were a part of the team that was actually designing and implementing those tests, if I'm not mistaken. Yes. Now कुछ लोग कहते हैं कि यार ये टेस्ट सिर्फ और सिर्फ एक गेम होती है और आपने वो गेम खेल के जो इनको हैक करना होता है, and there's loads of hacks you can find. So what's the reality with them? Like what are the tips or how do you prepare for these tests की cycle जब आने वाली होती है? Alright, टेस्ट जो हैं काफी कंपनीज ने अब स्टार्ट कर दिया लेने. पाकिस्तान से बाहर तो हर कंपनी का सेकंड स्टेप जो होता है वो टेस्ट ही होता है, ठीक है. अब पाकिस्तानी कंपनीज ने भी टेस्ट लेना शुरू कर दिए हैं. आई थिंक आर्बिसॉफ्ट बीइंग स्पीयरहेडिंग दिस फ्रॉम पाकिस्तान. एज फार एज आई नो, उन्होंने अपना प्रोसेस आउटसोर्स भी किया. यू कैन जस्ट गो टू देयर ब्लॉग एंड सी के वो सारा प्रोसेस क्या होता है. टेस्ट बिल्कुल भी गेम नहीं होती. टेस्ट को हैक करना बहुत मुश्किल होता है. द टेस्ट इज एक्चुअली so डिफरेंट किस्म के टेस्ट होते हैं. मैं आर्बिसॉफ्ट वाले टेस्ट के बारे में बात कर सकता हूँ क्योंकि आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ दैट. What they do is they get you for a whole day at Arbisoft just trying to mimic a simple day at the job of yours. Yeah. कि अगर आप अपनी जॉब पे पूरा दिन गुजारेंगे तो आप कैसे काम करेंगे. और उसमें क्वेश्चंस होते हैं, कुछ ओपन एंडेड होते हैं, कुछ क्वेश्चंस होते हैं थोड़े से मतलब बिल्कुल स्पेसिफिक, ये टेस्ट केसेस पास करने हैं उसके हिसाब से होते हैं. तो आई वुड रियली नॉट एग्री टू दिस स्टेटमेंट कि ये बिल्कुल एक गेम होती है या फिर ये इसकी ट्रिक्स होते हैं बस करने के. और अगर कोई बंदा जेन्युइनली शार्प और स्मार्ट है और वो नहीं कर सकता,
I think these are very carefully crafted by people who Hmm. who are at the other side wanting to hire people like you. Yeah. तो या आई थिंक अगर अगर ये Okay. मिसकंसेप्शन है किसी की तो या मेरा एक और सवाल है मुझे इसमें कि काफी लेस लाइकली है कैसे. इस तरह के टेस्ट और साइकोमेट्रिक टेस्टिंग और ये सारी जो फॉर एग्जांपल वी टॉक अबाउट यूनिलीवर एंड दीस बिग फर्म्स स्टेपिंग असाइड फ्रॉम टेक फॉर अ लिटिल बिट इनके टेस्ट ऑफ्टन I've seen, I mean, we've been a part of this in our life before कि कोई कहता है यार मेरे लिए भाई ये टेस्ट कर दो या वो कहता है अच्छा यार ये टेस्ट नहीं हो रहा मेरे से मेरे टेस्ट कर दो and there's always that guy एक फ्रेंड्स ग्रुप में होता है जो सबके टेस्ट कर रहा होता है. Does this kind of stuff get caught out later on? Is this something that you would advise? Is it something that you would advise against? And if so, why or why not? Salman, your voice is breaking off a little bit. Can you repeat the last part of the sentence? Yeah. आवाज आ रही है मेरी? हाँ, yes. मैंने कहा कि वो हमेशा एक दोस्तों के ग्रुप में एक बंदा होता है जो बाकी सब दोस्तों के टेस्ट कर रहा होता है. सो वो एक किसी यूनिलीवर का टेस्ट आ गया अच्छा भाई मेरा टेस्ट कर दो किसी इंश्योरेंस का टेस्ट. Is this something that you would advise? Does this get caught out often? How would you sort of see this approach? Is it better कि बंदा खुद ही टेस्ट दे even if it results in a worse result? यार हाँ, all right. So I in some situations I've been this person जो दूसरों के टेस्ट करता है, लेकिन to be honest होता यही है कि ना end पे it's just you in front of a person and you've been working for the last 5 to 6 years, right? You also know कि यार 5 से 6 साल अपने से जूनियर बंदे को जब आप देखते हैं ना आपको 5 मिनट में पता चलता है वो कहाँ पे है. टेक में तो आप बिल्कुल भी ये नहीं कर सकते. अगर आप टेक में ऐसे कर भी लेंगे ना तो when you go on the on-site interview आपके सामने अगर इंटरव्यूअर बैठा हुआ है तो आपके टेस्ट के रिजल्ट्स भी उसके पास पड़े होते हैं. एंड इफ यू आस्क यू समथिंग वेरी बेसिक और आपने टेस्ट में लेट्स से 28 on 30 लिए हुए हैं और आपको बहुत बेसिक चीज नहीं आ रही तो it's a very big red flag for them. और हो सकता है कि आप पहले 20 out of 30 लेके क्वालिफाई कर देते लेकिन आपके 28 out of 30 लेने के बाद जब आपकी चीटिंग एक्सपोज हो गई है तो बहुत मुश्किल है कि आपको कोई कंपनी आती है ऑन द बेसिस ऑफ इंटेग्रिटी एंड एवरीथिंग. तो मैं बिल्कुल भी एडवाइस नहीं करूंगी टेक में. तो इट्स नियरली इम्पॉसिबल. आप एक टेस्ट करवा लेंगे किसी से किसी ने किसी पे जस्ट गेट ऑफ. And I remember ये in fact बाहरी कंपनीज काफी ये करती हैं. So they do a psychometric test first और फिर वो in office assessment center जो होते हैं ना वो expose करता है कि किसने psychometric test किसी और से करवाया है because they essentially get you to sit the same test and you're going to give different results at the end of the day. So it does mostly get caught out. Okay. One last thing in this sort of section. जो application process होता है in terms of going and applying on different portals, how to create your CV, what kind of cover letter to write, do I write a cover letter or not? Tech jobs में usually क्या norms हैं जो कि as an employer आप sort of propose करोगे या आप suggest करोगे लोगों को? Alright, yeah. सबसे पहले तो I have a very detailed video on this on my YouTube channel as well. उसमें I've pretty much detailed कि यार CV में ये चीज़ होनी चाहिए, cover letter में होना चाहिए. आपके CV के अंदर आपने हर चीज़ नहीं लिख देनी क्योंकि if you write 10 languages और आपका इंटरव्यूअर उनमें से एक में एक्सपर्ट है और आपसे वो पूछ लेता है you end up knowing that तो वो बहुत बुरा इंप्रेशन जाता है. But something that I really want to shed light on in this section is कि हम में से काफी ज्यादा लोग जब भी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो हम उन्हें पब्लिकली देखते हैं, पोस्ट किसी को लिंक्डइन पे देखते हैं और डिफरेंट कंपनीज की वेबसाइट्स पे देखते हैं और अप्लाई कर देते हैं. वी शुड बी सो जो भी इंसान जो भी स्टूडेंट या प्रोफेशनल भी अप्लाई कर रहे होते हैं जॉब तो दे शुड नो कि अगर ये आपको नजर आ रही है तो ये और भी हजारों लोगों को नजर आ रही होगी और क्योंकि 2 से 3 क्लिक्स में अप्लाई हो जाता है तो वो भी कर रहे होंगे. द थिंग दैट आई रियली एम्फसाइज ऑन in the case of applying for jobs is that you should really try asking for help from people who you know. I don't know if it's a cultural thing or not, like we generally don't, well, humans generally don't ask for help that often. You would be surprised to know that agar, I mean, take your example, okay? Salman, if somebody messages you on LinkedIn and he says कि आप बीकन हाउस में पढ़ते थे तो मुझे बताएं कि क्या बीकन हाउस का स्कूल है या फिर आपने लेट्स से इस यूनिवर्सिटी से आपने बैचलर्स किया अपना, मुझे बताएं उसकी एप्लीकेशन कैसे लिखते हैं. यूड बी वेरी हैप्पी टू जस्ट फैसिलिटेट देम एंड टेल देम कि यार हाँ ये इस तरह कर लो. तो जो भी स्टूडेंट जिस भी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं या जिस भी स्कूल में पढ़ रहे हैं
इट्स वेरी लाइकली कि उनकी यूनिवर्सिटी के लोग डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर कंपनीज में और डिफरेंट इवन अदर कंपनीज में आईटी डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे होंगे. आई रियली इंकरेज पीपल टू आस्क देम फॉर हेल्प. अगर अगर मेरी यूनिवर्सिटी, मैं नस से पढ़ा हूँ, अगर मेरी यूनिवर्सिटी का कोई जूनियर, किसी भी यूनिवर्सिटी कोई जूनियर मुझे रीच आउट करता है और मुझे कहता है कि यार मुझे आर्टिसों के लिए प्रिपेयर करना है, तो मुझे बता दें कि मैं क्या क्या करूँ. मुझे इट वुड जस्ट टेक मी वन ऑडियो मैसेज टू रिप्लाई टू देम, एंड इट कुड प्रॉब्ली मेक द डिफरेंस इन देम गेटिंग इन इनटू द कंपनी और नॉट. पहली ये Yeah. चीज. सेकंड ये भी कि जो लोग उन कंपनीज में काम कर रहे होते हैं, इफ यू जस्ट आस्क देम कि यार मैं आपकी यूनिवर्सिटी का जूनियर हूँ, प्लीज प्लीज मेरा इंटरव्यू इंश्योर करवा दें. पीपल हु आर इनसाइड द कंपनी, जब वो जाके एचआर को कहेंगे कि यार इसका इंटरव्यू प्लीज करवा दें, इट्स आई कैन बी 95% श्योर कि अगर आप किसी एम्प्लॉय को कहेंगे ना कि मेरा इंटरव्यू करवा दें, तो एचआर डिपार्टमेंट आपका इंटरव्यू जरूर करवा देगा. I तो ये agree. दो तीन चीजें हैं which are not very common. I call them the hack on my channel. तो ये हैक मेरे ख्याल से ये इंटर्नशिप्स के लिए भी चलता है, ये हैक जॉब्स के लिए भी चलता है, ये हैक एक्सपीरियंस जॉब्स के लिए भी चलता है. दिस इज समथिंग दैट पीपल शुड डू मोर I ऑफन. think just adding on to this point, it usually does show initiative एक बंदे की तरफ से. अगर मुझे कोई आके कह रहे कि यार I would like to do an internship at Kamayi, or if someone is coming up to me and saying, "Here, my cousin or my friend has expressed an interest in doing a job at Kamayi or an internship," I will never grant them a job based on that, but I will grant them a conversation. उनको दरवाजे में यस. घुसने के लिए हेल्प कर सकते हैं. कोई आगे पहुंचना उनका काम खुद ही होता है, और वो स्किल और यस. पर्सनालिटी के बेसिस पे होगा, बट एटलीस्ट गेटिंग थ्रू द डोर यू कैन डेफिनेटली आस्क फॉर दैट, सो दैट्स वेरी हेल्पफुल. You can अच्छा, just stand मूविंग ऑन out टू of the noise very easily. एग्जैक्टली या अब आप शायद कोई 50 लोग मैसेज कर रहे हैं आज के भाई मुझे आर्बिसॉफ्ट में जॉब लगवा दें, सो गुड लक विद द रिस्पांसेस टू दैट. अच्छा, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन नाउ. टेक में काफी लोग, एक्चुअली दिस इज नॉट नेसेसरली वेरी रिस्पांसिबल फॉर टेक ओनली, दिस इज जेनेरिक. काफी लोगों का आजकल शौक है एक नीश बिल्ड करने का, एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर जाने का, एंड दिस अप्लाइज टू टू थिंग्स. वन इज द काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी यू आर वर्किंग ऑन, and one is the kind of sector or industry vertical that you're working on. So I'm going to talk about the technology aspect first. Yes. Um, Two parts to this question. One is, should you identify or try to build a niche early on in your career? And second is, if you should, then how should you do it? All right. To answer your first part, I have had a lot of guests on my show. वो लोग जो Amazon में भी काम करते हैं, जो डिफरेंट कंपनीज में काम करते हैं, काफी अच्छी रिस्पेक्टेबल कंपनीज में बहुत अच्छे एक्सपीरियंस के साथ, एंड ऑल ऑफ देम हैव सेड दिस, एंड आई आल्सो कोट दिस के जब अपना करियर स्टार्ट कर रहे हैं आप यूनिवर्सिटी में, गो एज वाइड एज पॉसिबल. आप हर चीज ट्राई करें, हर चीज को एक्सपीरियंस करें. जस्ट ट्राई टू सी के व्हाट just stands out for you, what comes naturally to you. हो सकता है कि मेरे लिए वो बैक एंड डेवलपमेंट थी, किसी और के लिए वो एंड्रॉइड हो, बट यू वोंट नो if Android is for you if you haven't tasted. तो आप अपनी यूनिवर्सिटी में भी, यूनिवर्सिटी इज द टाइम व्हेन यू हैव सो मच टाइम. जब जो अगर भी सुन रहे हैं स्टूडेंट्स भी, वो भी जब ग्रेजुएट करेंगे तो वो भी यही सोचेंगे कि यार हमारे पास यूनिवर्सिटी में इतना टाइम था, हम यही कर लेते. वी यूज्ड टू थिंक द सेम थिंग. बट यूनिवर्सिटी इतना ज़्यादा टाइम था आपके पास टू एक्सपेरिमेंट विद थिंग्स. तो जस्ट टेस्ट एवरीथिंग, टेस्ट डेटा साइंस, टेस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टेस्ट बैक एंड डेवलपमेंट, फ्रंट एंड डेवलपमेंट, एंड्रॉइड डेवलपमेंट, रिएक्ट नेटिव डेवलपमेंट, iOS, इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं. एंड वंस यू स्टार्ट डूइंग दैट, आपको कोई ना कोई ऐसी चीज़ मिल जाएगी जिसमें योर आपका इंटरेस्ट ज़्यादा होगा कंपेयर टू द अदर्स. And that is something that can give you a very good starting point for your career. I've interviewed people as my guests who have said कि यार करियर के पहले 3 साल भी आप एक्सपेरिमेंट करो डिफरेंट चीजों से, ताकि आपको पता हो कि क्या क्या चीजें होती हैं, and then you find a niche and be a master in that. तो basically I didn't, मतलब when I look back, I kind of just acted on that advice too. I tried iOS, Android, back end, front end, and data science as well. But in all this, I found that DevOps or backend engineering wala part jo hai na, that just comes really naturally to me, and I love that. Okay, and that has become my niche now. So
But इसमें do you feel कि let's say एक बंदे ने या someone's worked for about 3-4 years now. I mean, I'm talking and referring to people who have got that kind of experience, not just fresh grads. उन्होंने let's say technologies पे काम करके they've decided an area कि यार अच्छा ये मेरे लिए suitable लग रहा है. They're working a job जहाँ पे थोड़ा सा let's say उनका generalist किस्म का role है, full stack role होगा for example. But if they decide a particular area or a specific area of expertise where they want to continue their career, how would you propose or suggest कि वो उस point onwards अपना career लेके जाए? All right, yeah, good question. हाँ, so as टेक जैसे आहिस्ता इवॉल्व होती जा रही है और बहुत ज्यादा लोग इसके अंदर आ रहे हैं, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट भी है. there used to be a time जब एक फ्रंट एंड ओनली डेवलपर was useful. There was a job role that's front developer. But right now, when I look at the jobs that are coming in Europe, in the United States as well, so there are very less jobs that are for the front end role only. कि जी हमें सिर्फ front end developer चाहिए. So when you're working in even internationally, companies are moving towards a more full stack role जहाँ पे they're saying कि अच्छा ठीक है, you have to be an expert in front end, but you should also know something about the back end Yeah. APIs, ताकि you can actually add cross functional value to the team. ठीक है, there are so when they hire for back end, they would expect कि आपको back end तो आता ही है, लेकिन आपको शायद जावास्क्रिप्ट का एक छोटा सा फ्रेमवर्क आता हो फ्रंट एंड पे, और आपको डेवऑप्स की चीजें भी आती हो, आपको एडब्ल्यूएस के साथ भी एक्सपीरियंस हो. तो 5 years ago back end engineer was a job role, but now back end engineer only, मेरे ख्याल से that role is diminishing. And 5 years ago, Yeah. a front end only engineer used to be a job role, but now I think the value for the only pillar roles, it is diminishing that way, and people want somebody who can just add value all round. So would you then, ये जो भी like let's say any fresh grads or any university students are listening, would you suggest to them to take a more generalist approach? Would you suggest for them to try and get involved in trying and learning both back-end and front-end techniques, let's say for developers, or would you recommend कि यार आप अपने एक ही में stick करो और चलते जाओ उसमें? Absolutely, I would say कि आप अपनी यूनिवर्सिटी में as general as possible रहें. मैं हमेशा ये कहता हूँ कि यार दो लैंग्वेजेस वाला दो दुनिया में चल रही हैं. There's Python and there's JavaScript. अगर आप पाकिस्तान में किसी भी यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे हैं, तो you should either learn Python or JavaScript. दोनों काफी मतलब to start with काफी easy languages है. Intermediate और professional level पर थोड़ी different होती है, लेकिन so you can do a lot of things using Python. You can do things related to data, you can do things related to backend development. आप scripting कर सकते हैं, crawling कर सकते हैं. You can do और एक simple JavaScript framework के साथ you can just build very big websites as well. The same goes for JavaScript as well. JavaScript में भी you can write backend, you can write front end, you can even do data science now. तो ये दो लैंग्वेजेस हैं. इन दोनों लैंग्वेजेस को एक दफा देखें, इनमें से जो आपको ज्यादा पसंद आती है उसमें स्टार्ट करें, और अपने आप को बिल्कुल फ्लेक्सिबल रखें, क्योंकि आपको नहीं पता कि जो चीज आपको भी बहुत अच्छी लग रही है, हो सकता है कि उससे भी एक और अच्छी चीज आपको बाद में लग जाए जब आप टेस्ट करें बाकी सारी चीजें. तो आई वुड से ऑलवेज टेक अ जनरलिस्ट अप्रोच एंड नो हाउ द होल के बैकएंड कैसे. अगर आप फ्रंट एंड डेवलपर है भी ना, यू शुड इवन नो कि यार बैकएंड पे एपीआईज कैसे चलती हैं, डेटाबेसेस क्या होती हैं, DevOps क्या होता है, और how all of it works in the grander scheme of things. Okay. Okay, and now if we talk about sort of sectors, मेरा by profession I am a chartered accountant, और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं दूर से दूर भागूं accounting से. So when you're starting on your career, I really like what you said about experimenting, क्योंकि वो experiment किए बगैर आपको कभी पता नहीं चलता कि आपको कौन सी चीज पसंद नहीं है. You'll never find out what you don't like, and usually that's the process of reaching the point which of finding something which you do like. So when you look at potential domains or sectors, do you sort of suggest or recommend that people try and focus in or zero in on a particular domain? जिस तरह आजकल ये B2B retail is a very hot sector in Pakistan. Transport and logistics was a very hot sector a while back. There are these sort of sectors coming up. Healthcare is a very sort of
busy area these days. So do you recommend for people to start focusing on a particular subject area, or do you recommend कि उसमें भी general approach रखा करो? हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन। अच्छा, मेरे साथ मेरे करियर में ऐसा हुआ कि आई स्टार्टेड विद ऑनलाइन एजुकेशन एंड टू बी ऑनेस्ट आई डिडंट लाइक इट। तो फिर आई मूव टू डिफरेंट अदर स्टैक्स। शुरू में यही था कि यार आई जस्ट हैव टू बिल्ड सॉफ्टवेयर दैट जस्ट क्रिएट्स वैल्यू इन द रियल वर्ल्ड। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आई फाउंड आउट कि मेरे लिए इट मेरे लिए द पैशन एंडेड अप बीइंग इन लॉजिस्टिक्स एंड नॉन ट्रिवियल ई कॉमर्स, आईड से कि मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड कॉमर्स कह सकते हैं, ई कॉमर्स कह सकते हैं। तो and that also came from experimenting, because I had experimented with online education, with surveying related software applications, with um, different domains के साथ. So but I would definitely say कि it really helps to be in a domain जो कि valuable होने वाली है या जो कि blow up करने लगी है. So I think logistics is something that is here to stay for the next, I think, 5 years. इसी तरह you've also mentioned कि वो B2B retail जो है, that is also here to stay for the next 5 years, I think. तो वो what ends up happening is कि उस डोमेन में इतनी ज्यादा जॉब्स आ जाती हैं कि फिर अगर आपका थोड़ा सा भी एक्सपीरियंस है ना उस डोमेन में, then you just stand out from the rest. और स्पेशलिस्ट रोल तो रहते हैं, but to be honest it just came naturally to me. And I think when you're experimenting with different stacks and probably different companies and teams, so you naturally just stay 2 to 3 domains, and then you can find something that you love and then just get into it deeper. So Yeah. when you're experimenting with back end, front end, and everything, so वैसे तो if you become a valuable engineer in the sense कि आपको back end भी आता है, आपको front end भी आता है, and you're more than halfway decent at them, the companies that you're working in will give you a chance themselves to work in different projects and lead different projects as well. Because you have a holistic view of the software, of how software works. तो ऐसे लोगों के लिए वैसी ज्यादा opportunities होती है different projects पे काम करने की, and then you can even negotiate कि यार मुझे इसमें मजा नहीं आ रहा, मुझे वो चीज करनी है. तो that is also something that comes with this. So sorry, the answer is not very specific. Like I think the same approach follows over here as well. ठीक है. I think just one more thing I'd sort of like to add over here from my own experience. I think काफी लोग expect करते हैं कि उनको niche एक दिन आसमान से जो है गिर के उनके सामने पड़ेगी कि यार this is my calling for the rest of my life, and it's usually not like that. आप किसी coincidence या बस किसी weird रास्ते से एक मंजिल तक पहुंचते हो जहाँ पे you realize कि यार I kind of enjoy working in this sector. Let's see if I can do 2 years here, or I can do 5 years here, or I can spend the next 10 years here. And it's still sort of a day-to-day approach. I don't think anybody is ever shown कि मैंने पूरी जिंदगी इस sector में लगानी है. But I think as long as you are willing to experiment, and when you have taken a decision, to at least give it your all while you're giving it that decision. So I think ये चीजें बड़ी जरूरी होती हैं. What is बिल्कुल, next? definitely agree. अगला जो टॉपिक है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है मेरे लिए. हम लोग काफी लोगों को फोन करते हैं और हम उनको एक पोटेंशियल जॉब ऑफर करते हैं. वो कहते हैं यार मैं अभी सैलरी जो है इससे थोड़ी 10,000 ज्यादा ले रहा हूँ फॉर एग्जांपल. But they don't take into account the kind of experience and responsibility they're going to get at a smaller company. They don't value that autonomy. तो एक होता है ट्रेड ऑफ होता है हमेशा एक जॉब स्विच करने में या एक जॉब सिलेक्ट करने में. मैं एक बड़ी कंपनी में जाऊं या मैं एक छोटी कंपनी में जाऊं, मैं एक हाई सैलरी लूं या मैं एक लो सैलरी लूं. बिकॉज उस बड़ी कंपनी के रोल में आपको बेशक हाई सैलरी मिल रही होगी लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी कम होगी, लर्निंग कम होगी. So how do you sort of look at this trade-off between high salary, low learning jobs versus low salary, high learning jobs? That's the first question. Right. हाँ यार, ये I get asked this a lot. So all right, मेरी जो de facto advice होती है ना for students starting their career, वो ये होती है यार कि पहले 3-4 साल के लिए आप सैलरी को भूल जाओ. ठीक है? Just find a company, find a job, find a mentor who is going to teach you. आप उस्ताद ढूंढे जो आपको स्किल सिखाएगा. My younger cousin who just lives with me, उसको भी मैंने यही advice दी थी, and he luckily followed on that, and now he's at a point where he just gets job offers
इन एंड आउट, ठीक है, एंड नाउ ही कैन नेगोशिएट कि यार मैंने कहाँ पे जाना है. तो ये ह्यूमन साइकी होती है एक्चुअली. द माइंड जस्ट डजंट वांट यू टू कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन. इफ इट वाज अप टू आवर माइंड्स, तो वी वोंट गेट आउट ऑफ द बेड in the morning हम्म, is either. ठीक है, the mind just doesn't want you to put yourself in situations of risk क्योंकि वो आपके survival को challenge करता है. So eligible. I think एट द स्टार्ट ऑफ योर करियर तो आपको बिल्कुल भी किसी ऐसी कंपनी में नहीं जाना चाहिए जहाँ पे आप इंजॉय कर रहे हैं, जहाँ पे आपके पर्क्स बहुत ज्यादा हैं, जहाँ पे आपको दिन में 3 घंटे काम करना पड़ता है, बाकी टाइम आप फुटबॉल खेल रहे होते हैं, जहाँ यार पे हमारे आपके व्यूअर्स में ऊपर वैसे 4 years अहमद, ऑफ मैं काटता हूँ, हमारे व्यूअर्स में टीम कहना है लीड. कि यार अहमद भाई खुद आर्बिसॉफ्ट में 6 साल गुजार के हमें कह रहे हैं कि ऐसी कंपनी में ना जाएं जहाँ पर अच्छे हैं. नहीं, मैं I worked at other companies before Arbisoft briefly as well. और I'm happy to share that experience. I remember I remember working I remember coding for 32 hours straight at a desk. मतलब I can have my friends vouch for it as well. So वो है that is वो कर different. चुके and हुए हो, and and I गॉन was थ्रू दैट lucky कि ग्राइंड. हाँ, I've gone through the grind. हाँ, और मेरी लाइफ में ये भी था कि I always had something on the side as well. So even when I was at Arbisoft, after disclosing, I always had something on the side just to mask कर रहा था. But that is a different story. But so the point I'm trying to make is also I joined Arbisoft when 85 people. Now it's a 600-person company. So that was a little different. लेकिन so the thing that I'm trying to get to is कि ये जो सारी जो होती है ना, जो आपको जो ग्लैमर से रिलेटेड चीजें होती हैं जॉब की, जस्ट गेट अवे फ्रॉम दोस एंड गो टू सम प्लेस जहाँ पे वो आपको दे जस्ट गिव यू अ रन फॉर मनी. दे जस्ट ग्राइंड यू, दे टीच यू एवरीथिंग, क्योंकि दे आर आल्सो स्ट्रगलिंग, सो यू आर आल्सो ग्रोइंग विद देम. वो भी ग्रो कर रहे होते हैं, आप भी ग्रो कर रहे होते हैं. तो या लुकिंग फॉर अ मेंटर इज वेरी इंपॉर्टेंट. ऑन द अदर पॉइंट, यू सेड कि लोग ज्यादा सैलरी ले, आई थिंक ज्यादा सैलरी से कम सैलरी पे आना बहुत मुश्किल हार्ड डिसीजन है किसी भी इंजीनियर के लिए, किसी भी इंसान के लिए. तो बट दैट सेड, आई थिंक अगर आपको इक्वल सैलरी पे एक बहुत एक्साइटिंग और अच्छी लर्निंग अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आई थिंक यू शुड टेक इट 10 times ऑर्डर. यू विल, योर फ्यूचर सेल्फ विल थैंक यू सो मच कि आपने ऐसे किया. I agree. I think I think that is also true for other domains as well, Salman, right? yeah, absolutely. It's not just tech. It's absolutely true for all domains. इसमें एक और भी चीज आती है. People are also wired very differently. कुछ वो लोग हैं जो कि थोड़े से उस मेंटालिटी के होते हैं कि यार I want to be working in a small team and I want all the responsibility and I want all the challenges and I will take all the initiative in the world. कुछ लोग होते हैं जो ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं एक टीम एनवायरनमेंट में ऑपरेट करने की जहाँ पे उनकी प्लेट थोड़ी सी प्रेशर खाती हो, बट they have a certain set timeline and there's nothing wrong with either one of those approaches. I think it's just important to identify Yeah, at which point in your career you are and take decisions yeah, accordingly. Because if you are someone who is comfortable working in very controlled environments, then you should try and get a job in a controlled environment because a chaotic environment में आप पागल हो जाओगे. And vice versa, if you're yes, someone who enjoys sort of creating order out of chaos, और आप एक बहुत ही 9 to 5 वाली जॉब में जाओ जहाँ पे आपकी autonomy और responsibility नहीं है, आप बोर हो जाओगे and eventually you sort of start losing your drive and your initiative. So I think it's just important to identify. um, एक और पे trade off का सवाल है मेरे पास, which is एक चीज ऐड करनी सलाम मैंने. please सो please रूल ऑफ थंब आप ये रख लो, कोई भी है ना, रूल ऑफ थंब ये रख ले यार कि आप जहाँ पे भी काम कर रहे हो ना, जस्ट सी 3 years और 5 years, 5 years ahead of you. आपने सीनियर बंदे को या 5 साल सीनियर बंदे को देखो, और देखो अगर आप 5 साल में वहां पे होना चाहते हो, द आंसर इज यस, तो डू कीप वर्किंग हियर. इफ आंसर इज नहीं यार, मैं तो 5 साल बाद इसकी जगह पे नहीं होना चाहता, देन जस्ट स्विच, देन जस्ट गो टू सम प्लेस जहाँ पे आपको 5 साल बाद ऐसे लोग मिले जो आपसे 5 साल सीनियर हो और वो एक इंस्पायर या रिमार्केबल पोजीशन पे हो आप लिए. Yeah, I agree. I agree with that. This sort of feeds into my second question, so thank you for this. Ajkal, there's a lot of people who come straight out of university, and because of Fiverr and because of Upwork and because of these freelance websites, उनको काफी self employment की opportunities मिल जाती हैं.
So, up actually, to be honest, we're seeing the growth of a third option when you graduate university, which is not just either employment or further studies, it is also self-employment. वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी दो फॉर्म्स में आता है कि या तो मैं खुद ही फाइवर फ्रीलांस वगैरह के अपवर्क के ऊपर अपने अकाउंट्स बना के फ्रीलांसिंग करूंगा या फिर मैं अपने दोस्तों के साथ खड़े होकर एक सॉफ्टवेयर हाउस बना दूंगा. How would you sort of suggest people to go about these, and do you think these are recommended paths to follow, or do you think people should follow the traditional paths कि यार नौकरी लो learning करो उसके बाद जो करना है कर लो, but start off with these two areas? Yeah, so now this question is very close to my heart. ठीक है. और I am a so मैंने ना फर्स्टली तो ये कि 10,000 आवर रूल मैंने आपको पहले बता दिया. ठीक है. मैल्कम ग्लैडवेल दुनिया के सारे हाई परफॉर्मर्स के ऊपर रिसर्च करके उसने ये निकाला कि यार जो 10 हमें लगता है बिल गेट्स 21 साल की उम्र में वो मिलियनेयर बन गया था, लेकिन बिल गेट्स स्टार्टेड प्रोग्रामिंग व्हेन ही वाज 12. ठीक है. वो हम नहीं देखते. सो मेरा द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि मैंने I've worked on multi-million dollar projects. I've been taking interviews from the last 5 years. और Arbisoft में pretty much पाकिस्तान का top talent आता है इंटरव्यू देने के लिए भी. ठीक है. मतलब other than मेरे से एक या दो instances, I haven't found people who are ready for the industry graduate. ठीक है. ये this is the data that is first hand from my own self. मेरे अपने इंटरव्यू में खुद इंटरव्यू किया हुआ जिन लोगों को जिनसे मैं डेटा दे रहा हूँ. ठीक है. और व्हाट हैपेंस इज कि जब आप ग्रेजुएट करते हैं तो जो डॉलर के रेट का आर्बिट्राज होता है ना कि $1 $160 का होता है, वो आर्बिट्राज में हो सकता है $5 पर आवर पे आपको काफी मतलब आपके कंटेम्प्रेरी से आपको बहुत ज्यादा अच्छी सैलरी मिल रही हो. 160 आवर्स होते हैं, 5 से मल्टीप्लाई कर लें, यू हैव $800 आपको मिल रहे हैं. आपके सारे कंटेम्प्रेरीज उनको $40,000 सैलरी या $50,000 मिल रही है, आपको 1,20,000 1,30,000 मिल रही है. इन द शॉर्ट टर्म यू कुड लुक लाइक अ हॉट शॉट और हीरो के यार हाँ ये इस बंदे ने अपना कर लिया एंड एवरीथिंग. बट वेरी सून ऐसे होगा, 2 साल के अंदर 3 साल के अंदर ऐसे होगा कि वो वाला स्टूडेंट जिसने एक अच्छी कंपनी में जॉब की, 2 साल उसने बहुत ग्राइंड किया, बहुत सारी चीजें सीख ली, नाउ दैट पर्सन विल बी significantly more valuable than you, will have experience of working on exciting projects, will have the experience of delivering exciting projects. He will have a higher hourly rate than you for sure, and he'll also know how to work in teams. ठीक है. Yeah, that's very important. तो start में you could see it's not a sprint, it's a marathon. It doesn't matter कि आप half time पे स्कोर में आप 3-0 जीत रहे हैं. What matters is कि full time पे क्या स्कोर है. ठीक है. तो अगर आप लॉन्ग टर्म मेंटालिटी लेके चलते हैं, आई थिंक कि किसी भी स्टूडेंट को अनलेस के वो जीनियस हैं बिल्कुल, जो मतलब मैंने बहुत कम देखे हैं, तो उनको 10,000 आवर्स से पहले जो है they shouldn't do their own thing. They should just try work under somebody. They should try standing on the shoulder of giants, learn from them so that they can just do your own thing, do their own thing. When you have experience, so job करते हुए ना you can fail on other people's expense as well. ठीक है. Yeah, people true. working at Kamayi can fail at Salman Shahid At my expense. and that is okay. Yeah, that is okay. okay. That is okay for them, ताकि वो कल को जब अपनी कंपनी स्टार्ट करेंगे तो they don't make that $10,000 mistake on their own self. तो मैं तो I'm a very strong proponent of just working and learning at least the first 3 to 4 years और उसके बाद कुछ करें अपना. Well, I hope nobody in Kamayi is making a $10,000 mistake right now. करेंगे. But इसमें एक और चीज भी आती है वैसे, to be honest, which being someone who connects employers, जब एक employer के पास CV जाती है ना बच्चे की, and let's say I'm comparing two CVs. Candidate A has gone out of university and gotten 2 years of work experience at a company, and candidate B has gotten 2 years of freelancing experience. वो freelance experience count ही नहीं करते. It literally, when you're talking about work experience and number of years, it counts for nothing. So the employers will not be able to offer you the same job that they would be able to offer someone who has worked for 2 years because of that
टीम लर्निंग, टीम के अंदर ऑपरेट करना, एक फॉर्मल एक ग्रोथ ट्रेजेक्टरी देना है। आप फॉर एग्जांपल आप जाके एसईओ के या इस तरह किसी काम के 500 ऑर्डर्स पकड़ सकते हो अपवर्क के ऊपर या फ्रीलांस के ऊपर, बट until and unless you see that growth and improvement in your skill over time, it's not really leading to a sustainable outcome. I think हमारे Yes, I agree. एक किसी ने बहुत relevant comment की है यहाँ पे, which I think applies to a lot of students actually. It is so hard to not compare ourselves with others. I think जब आप and I think what this is sort of implying, शायद जो मेरी रीड है, कि एक स्टूडेंट जब निकलता है यूनिवर्सिटी से एंड उसके बैच का एक बच्चा जाके आर्बिसॉफ्ट में नौकरी पकड़ लेता है और बाकी बच्चे छोटे छोटे सॉफ्टवेयर हाउसेस में they're not doing comparatively as well when it comes to let's say the salary or the LinkedIn fame. एक तो ये LinkedIn के ऊपर लाइक्स वगैरह की वजह से भी काफी इश्यूज आते हैं लोगों को. So it's hard, this person is right, it is hard to not sort of compare yourself with others and then take decisions based on that मायूसी या उस गम की वजह से या गुस्से की वजह से आप decisions लेना शुरू करो. So उस चीज को देखना बड़ा जरूरी होता है. अच्छा, one last topic we have today is before we get to the questions. जिन लोगों को पता है कि मैंने टेक में ही जाना है पूरी जिंदगी, and hopefully that's a lot of people because I believe and I'm sure Ahmed also believes कि tech is the future. सॉफ्टवेयर ने दुनिया में हर चीज को खा जाना है. So जिस बंदे ने वो long term career in tech लेना हो, what advice would you have for them? How should they sort of look at this problem? All right. Yeah. I think काफी so सबसे पहली बात तो ये मास्टर्स नहीं करनी. ठीक है, अगर आपने टेक में करियर करना है ना तो आपने बैचलर्स करना है और आपने उसके बाद आपने you just have to get so आप पाकिस्तान के Straight अंदर है into ना work. अगर तो you have to get into a company. हाँ, straight into work. ठीक है, और आपने पाकिस्तान की लैडर क्लाइम करनी है. You work in one company at least for 2 years and then go into another company which is better than that company, and then अगर वो कंपनी इतनी अच्छी है सेकंड कंपनी लेट से वहां पे और चैलेंजिंग प्रोजेक्ट करें, फिर और चैलेंजिंग प्रोजेक्ट करें, फिर और चैलेंजिंग प्रोजेक्ट करें. सो यू जस्ट वर्क योर वे अप द लैडर कि आपको लगे कि यार 2 से 3 साल के अंदर नाउ यू आर केपेबल ऑफ रनिंग अ होल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट ऑन योर ओन. Once you are at that level, then you are able to compete with people all over the world. तो वहाँ so पहले 3 साल के लिए तो मेरी तो ये एडवाइस होगी कि अगर तो आप बहुत कम लोग होते हैं जिनको बाहर डायरेक्टली जॉब मिलती है. आई डोंट नो एनीबडी हु हैज जस्ट ग्रेजुएटेड एंड गॉट अ जॉब इन यूरोप और द यूएस. लेकिन सो अगर पाकिस्तान से करना है तो ये तरीका है कि यू जस्ट वर्क इन पाकिस्तान, यू जस्ट ग्राइंड 24/7 for 3 years, reach some place जहाँ पे you are somebody who can just deliver a software engineering project on your own. And once you're at that point, then you start becoming valuable for people in the US or or in Europe as well. So then it's very easy for people with their experience ranging from 3 years to 8 years in getting a job in यूरोप और द यूएस. यूएस में वीजा के इश्यूज होते हैं, अदरवाइज यूरोप में काफी इजी है. ठीक है, सो देन द नेक्स्ट स्टेप फॉर यू कुड बी दैट कि 3 साल बाद 4 साल बाद आप ऐसे करें कि यू जस्ट गो एंड फाइंड अ जॉब इन अ कंपनी इन यूरोप और वहां से देन यू कैन जस्ट वहां पे भी you have two more choices कि you can just be in you can just climb the ladder over there or actually get into FAANG companies. By FAANG I mean Facebook, Amazon, Netflix, Google. तो वो एक ट्रेजेक्ट्री है. अगर आपने पाकिस्तान के अंदर रहना है तो पाकिस्तान के अंदर रहने के लिए भी सेम पाथ से स्टार्ट करते हैं. यू स्टार्ट विद 0 to 3 years. You work in a company that just teaches you कि अच्छी सॉफ्टवेयर कैसे लिखते हैं, and then you try for a remote job. आप remote job ढूंढ सकते हैं. I know so many people who are working in remote job. They're earning a lot of good money and working with very exciting companies and on very exciting tech as well. So अगर आपके आप अकलौते हैं, आपके माँ बाप इधर ही हैं पाकिस्तान में, आप नहीं उन्हें छोड़ के जा सकते. You have the option of remote jobs now. Remote jobs have become very much acceptable throughout Europe and US. और अब काफी सारे लोग remote jobs भी कर रहे हैं. रिमोट जॉब नहीं करते तो पाकिस्तान की लैडर क्लाइंब करने के बाद आपके पास सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का है. यू कैन जस्ट स्टार्ट योर ओन थिंग, यू कैन स्टार्ट योर ओन सॉफ्टवेयर कंपनी. आई थिंक टेक का जो बिजनेस है, इट इज वेरी
it's not at all capital intensive at all. It's human focused. तो आपको कोई लाखों करोड़ों रुपए नहीं चाहिए एक सॉफ्टवेयर बिजनेस शुरू करने के लिए. ज्यादातर स्टूडेंट्स और ज्यादातर इंजीनियर्स के पास अपने लैपटॉप्स भी होते हैं. You probably don't even, if you hire two people with you, you don't probably don't even need to give them laptops. You just need Yeah. to invest your brains and everything. So I think once you have the experience of delivering scalable, decent solutions, so you should, agar aap, if remote job is not for you and you see yourself running your own company, you can do that as well. Pakistan mein ye hai, bahar jana to wo different path hai. I hope that answers your question. Yeah, it does. And I think हम लोग आज ही before this sort of webinar, we were just having a conversation कि पाकिस्तान के लिए ये tech का कितना exciting time है. And it's, you know, it's such a great time to get into tech, and the next 5-10 years will be so much fun in seeing कि यार हमारे जो actual area के region के contextual problems हैं, social problems हैं, how are they going to be solved using technology. And it's not about necessarily just putting technology everywhere. It's about finding where it fits and making it a part of the solution. So that does really help for people who don't necessarily want to go abroad. या जिनके माँ बाप उनको जाने नहीं देंगे या उनके Yeah. बीवी बच्चे हैं, तो काफी वजूहत होती है. खैर, And there's a lot I'm of just, investment coming in as well. yeah, VC firms investing in Pakistani tech companies has become very frequent now. और अब वो स्टेट बैंक की भी last after the regulation अभी है. decision, तो VC firms can actually invest in companies that are registered in Pakistan and take money from here as well. So that is Yeah. something that is very very exciting for software companies in Pakistan. So we have some questions. I just want to read out one or two of them, and I want you to help me answer them. One is, what advice would you give for an undergrad electrical engineer to opt JavaScript or Python to start their career? If it can be done and learned, how can that person specifically polish their skills in these domains? I think आपने इन दोनों का नाम लिया था पहले. Okay. Yes. So yeah, I think इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के लिए काफ़ी ईजी होता है प्रोग्रामिंग को ग्रास्प करना, क्योंकि उनके कुछ बेसिक प्रोग्रामिंग के कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं. आई थिंक पाइथन इज अ वेरी इजी लैंग्वेज. इट्स वेरी क्लोज टू इंग्लिश, I'd say. So Python is a very good starting point for people, anybody who's just planning to just learn Python. तो फ्री कोड कैंप पर पाइथन के काफ़ी अच्छे कोर्सेज हैं. freecodecamp.org है, I guess. तो फ्री कोड कैंप पर काफ़ी अच्छे कोर्सेज हैं. There is also so I think that is a very good starting point. एक और भी link है, but I think I'll be sharing that later with Amna. She can probably send it to everybody. Perfect. Okay. One Yeah, more. I really encourage electrical engineers to work in. नहीं, continue करो, sorry. I really encourage electrical engineers to work in Python, क्योंकि electrical engineers का historically top merit होता है, ठीक है. And I think they're probably the smartest people of Pakistan. Electrical engineering वगैरह में जाते हैं top universities में. I think tech needs more smart people. That's I think a lot of people who are working in tech won't necessarily continue watching this interview after that sentence, but thank you. अच्छा, एक मेरा सवाल है वैसे. आजकल टेक में हम लोग जब हायरिंग कराते हैं, we see a lot of turnover, very very quick turnover. एक fresh grad होता है, that person gets a job within 6 months. They're going to get a job offer. एक बहुत severe supply demand mismatch है टेक के अंदर पाकिस्तान में लोगों का. So उसको जॉब ऑफर आती है, वो 5-10 हज़ार के लिए स्विच कर लेते हैं. Again does the same thing 5 months later, 4 months later, and 2 years later you have a CV जिसमें आप 4 जगह स्विच कर चुके हुए हैं. When one of those CVs comes to you as an employer, what do you think? What's your initial reaction? मेरा इनिशियल रिएक्शन ये होता है कि आई जस्ट कॉल देम एंड आस्क देम कि यार ये आपने क्यों स्विच किया, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कोई जेन्युइन रीजन हो, राइट. कि पहली कंपनी में लर्निंग नहीं थी, बॉसेस बहुत बुरे थे. मतलब 1 से 2 स्विचेस में तो ऐसे हो सकता है, बट अगर उस बंदे के हर जगह पे फड्डे हो रहे हैं, हर जगह पे वो यही कह रहा है कि यार नहीं, मेरे सीनियर्स को तो कुछ भी नहीं आता था, वो मेरे से इतना कर, तो देन दैट जस्ट singles out कि it is a problem on the candidate's end. I won't hire somebody जिसने 2 साल के अंदर 4 जॉब स्विच की है. Same. ठीक है. Okay. One more question I have, which is something which a lot of job seekers ask us. जो बच्चा किसी particular university से निकला हो,
लेट्स से फॉर एग्जांपल आजकल लोग लम्स के बारे में कहते हैं कि वो सारी जॉब लम्स के वालों के पास जाते हैं। टेक में भी इस तरह के कोई स्कूल्स होते होंगे जहाँ पे लोग कहते होंगे यार इफ यू फ्रॉम दैट स्कूल आई वांट टू हायर एंड फास्ट हैज अ वेरी गुड रेपुटेशन फॉर टेक आई नो। Are the people who are not at fast and who are in tech, are they really that disadvantaged जितना वो claim करते हैं? And if so, if I'm a job seeker not from fast, should I really be worried about getting a job? या फिर मिल जा सकती है as long as I'm proactive? Yeah, start में तो to be honest it's difficult. But Okay. the good news is कि the problem only lasts till your first job, till the first day of your first job. ठीक है, Hmm. आप अगर किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं जिसको मतलब सब ऑफ द टॉप ऑफ माय हेड मुझे नास्ट फास्ट और पीयूसीआईटी इन सम केसेस, PUCIT हाँ. ये तीन यूनिवर्सिटी है जिनसे लाहौर की कंपनीज हायर करना चाहती हैं, ठीक है। बट जो भी बाकी स्टूडेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटी से हैं वो थोड़े से डिसएडवांटेज पे होंगे स्टार्ट में, लेकिन एज सुन एज यू लैंड योर फर्स्ट जॉब, उसके बाद इट जस्ट बिकम्स अबाउट योर लास्ट जॉब। सो अपने फर्स्ट जॉब Hmm. में आप आ गए, नाउ इवन व्हेन यू आर इनसाइड द कंपनी, एट दैट पॉइंट इट डजंट मैटर कि आपके जो कोलीग है वो फास्ट है या नास्ट है, इट डजंट मैटर, इट Hmm. स्टार्ट्स बिकमिंग Performance की मोर बात एंड थी मोर एंड सारी. मोर अबाउट योर परफॉर्मेंस। और जब वहां से आप Yeah. नेक्स्ट कंपनी में जाएंगे ना, तो वो आपसे नहीं पूछेंगे आप किस यूनिवर्सिटी में, वो आपसे पूछेंगे आपने लास्ट जॉब में क्या किया। Yeah, I agree. There's good and bad news. Mostly bad news, but will become good news after your first job. Yeah, but unfortunately, to be honest, this is what it is. It is what it is. Okay. I have But one people who are last coming from other question. universities, उनके पास थोड़ी सी, नहीं नहीं sure, करो go खत्म on. करो खत्म करो. This is important. I think this is pretty important. हाँ, उनके पास थोड़ी सी a couple of things that they can do to stand out is कि एक तो वो कोई ऐसा प्रोजेक्ट करें which stands out in their CV, ठीक है, या फिर वो ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन करें, या फिर वो फ्रीलांसिंग इतनी ज्यादा करें अपनी यूनिवर्सिटी के दौरान कि उनके स्किल लेवल इतना ऊपर हो जाए कि दे कैन कम्पीट एट द स्टार्ट। I would be Okay. very excited to hire students who've done freelancing in the universities. Yeah. Okay. Okay. So one last question from my side, and that is, I am a fresh graduate. I have just completed my university. मुझे आप बताएं कि मैंने अब क्या करना है to get the kind of tech job I want. Alright, so आपने ग्रेजुएशन से ना 2 से 3, मेरे ख्याल से आपने ग्रेजुएशन 2-3 महीने पहले ही ना अपने सीनियर्स को पिंग करना स्टार्ट कर दें, और उनसे कह कि आपकी यूनिवर्सिटी के फ्रेश ग्रेजुएट हायरिंग प्रोग्राम्स जो है ना, मुझे उनके उसके बारे में बता दें और प्लीज मुझे एनरोल करवा दें। आप जिस मर्जी यूनिवर्सिटी से आपके सीनियर्स किसी ना किसी जगह पे होंगे। I, बिल्कुल being होंगे. the founder of a very small company, I need to hire 2 people right now, and people are graduating in 2 to 3 months. I need people who are graduating in 2 to 3 months. So yeah, everybody Shameless is looking for plug. graduates, by the way. Yeah, क्या that's हुआ? true actually. हाँ. मैंने कहा shameless plug है आपको अब जो है लोग. This is an open invite to anybody watching this to send their CV to Ahmed right now. उसने खुद ही मांगा है. Please ना Sure, शर्माइएगा. sure, sure. हाँ, हाँ, so you were saying basically कि आपको freelance वगैरह platforms में करना चाहिए काम. You should try and speak to your contacts, try and see if you can actually get into the door of any company and to get a conversation going. Is that what you're sort of saying? yes, absolutely, yes. और Python और JavaScript में से कोई एक लैंग्वेज पकड़ें और उसको सीखना शुरू कर दें। अगर आपको अपने कंटेम्प्रेरी से 50% भी ज्यादा आती होगी ना, यू बी वे अहेड ऑफ देम, क्योंकि वो कुछ भी नहीं, उनको कुछ भी नहीं आता होगा। Chale, perfect. Ahmed, is there anything that you want to sort of mention before we log off? I think this is going to be it for us. Yani, I think, I think thank you for having me. I just want I just hope that this helps people in getting a long-term approach to their career. I think अगले 5 सालों में there's going to be a lot of demand for long-term people, lot of demand for people who can build scalable, huge, maintainable, efficient tech. But there's not going to be a lot of demand for people who can just build tech. Yeah, So I I agree. think that is something that people should long term hona बहुत important है
playing long-term games with long-term people. I think that is Hmm. very important. Okay. Thank you everyone for tuning in. Thank you so much, Ahmed, for the time. We will definitely have another one of these Thank you for having me. conversations. Hopefully, जहाँ पे हम लोग update लेंगे कि क्या किसी viewer को job मिली है अहमद जुबैर के साथ कि नहीं मिली. Um, until then, thank you so much everyone for listening. And take care. Allah Hafiz. Thank you, Ji. Allah Hafiz.